So good morning to all of you. Those are now in online. Please connect with me so that we can start our RRB PO main test 07 English. Today we will discuss the main test. जो माने सब online रो अच्छो प्ले connect है जल्दी जल्दी. Then we can start our today's set. Okay. Total number of question है पहले 35 अच्छी. और को मान सब लाइन रो अच्छो प्ले जल्दी जल्दी discussion में ready जाओ पढ़े ऐसा. ओके गाइस चलो स्टार्ट कर दवा पिले देखो फर्स्ट तो देछि पैसेज तो देछि ठीक अछि पैसेज हम डिस्कस करबा तो फर्स्ट हम देखि नबा अदर सेक्शन को ओके हरी वेरी गुड मॉर्निंग हरी ओके हरी लेट्स डिस्कस कर दवा चलो कोड अछि ते क्वेश्चन अछि चलो लास्ट रो स्टार्ट कर दवा तो लास्ट रो स्टार्ट करे हरी सर एसएस ऑफलाइन केबे स्टार्ट हो चांदनी मेल वेरी गुड मॉर्निंग चांदनी वेरी गुड मॉर्निंग हरी ऑलरेडी आज टू ओपन हो जाउ इंस्टीट्यूट बट तमन जो जो बैच सब अछि तमको शेड्यूल बाहर जाय छै से हिसाब रे देखिनो ओके तो ग्रेजुअली हबो न्यू बैच ऑफलाइन तो क्लास 14 रु पूरा कंप्लीटली स्टार्ट हो जाउ छी हैना एट द टाइम फर्स्ट रु तो सब तो बैच स्टार्ट होनी धीरे धीरे स्टार्ट होची जो जो बैच मानो को इन्फॉर्म करा जिवो से बैच रे क्लास हो सब शेड्यूल पिले बाणी वेबसाइट रे लोड हो जाइतबो ताको देखि नेले फॉलो फॉलो करो जान पे ठीक अछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 156 देछि चलो डिस्कस करना पहले क्वेश्चन नंबर 156 आई थिंक गैप रोची पिले कम्युनिकेशन गैप रोची आज आई थिंक मतलब लाउची 2 to 3 मिनिट्स बड़ा गैप रहबो कम्युनिकेशन गैप मुझे बर्तन से फील कर लेनी कारण मो स्क्रीन रो YouTube रो स्क्रीन भीतर पाखे 2 मिनिट्स आज गैप रोची मे बी टेक्निकल किछ प्रॉब्लम थबो कि नेटवर्क प्रॉब्लम होथबो तो चलो तो मु क्वेश्चन नंबर 156 रो एरर रो स्टार्ट करूची मो पूरा एठी डिटेली कहि जाउची तो परे तुम वीडियो गुरा को देखि पारे जदि इन द मीन टाइम हम कम्युनिकेट ही पाउछन तो बेटर तो फर्स्ट देछि देखो क्वेश्चन देछि चारटा पार्ट रे फर्स्ट कर देछि तो चारटा पार्ट तुम बजाय छी को पार्ट रे एरर अछि फाइंड आउट करिया पय ओके तो को पार्ट रे एरर अछि फाइंड आउट करिया पय देखो छी से कहै छी while there have been efforts by states tales of hardship desperation and destitution have been moving all unsundry तमने एठी कोन हे परिबो स्क्रीन रे आछि त देखि मते जल्दी आंसर को देन आई विल डिस्कस तो बतन देखो 156 तो देखिबा
बफरिंग भी हिगलानी ओके तो देखो एटी कहछि while there have been efforts by states tales of hardship desperation and destitution have been moving all and sundry तब देखो अछि efforts सत्वे भी contrary statement देछि while the contrary को efforts कहछि while there have been efforts by states efforts हवा सत्वे भी tales of hardships desperation destitution these are the negative word have been moving all and sundry सब तो at a time आसुछि बिले सब तो at a time मूव करछि तो देखिया गले एक्चुअली सेंटेंस रे कोनसी एरर नाही तमे नो एरर एठी मार्क कर परिबो तो आउट क्लियर कर दोछि एठी एफर्ट्स देछि एफर्ट्स टा प्लुरल को देछि त देयर हैव बीन रेफर्स करा गला तापर टेल्स ऑफ हार्डशिप्स आउ कोन देछि डेस्परेशन डेस्टिट्यूशन बाय हैव बीन असला हैव बीन मूविंग ऑल एंड सनड्राई तो एठी हैव टा प्लुरल रेफर्स को तो इट इज कोनसी एरर नाही ताको तमे नो एरर नै जो 156 ई नै जाओ नो एरर क्लियर विकास वेरी गुड मॉर्निंग ओके तो बर्तन देखिया बिले नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 156 परे 157 को आसो 157 रे कोन दै छी a significant proportion of the migrant workers has already reached their home state thanks to the relaxation announced under lockdown 4.0 so कोइ छी का significant proportion of the migrant workers has refers करा गला a significant proportion of migrant workers that means it is subject कोन दै छी बडा collective noun दे आसिला जेमिति हम थाय कि a bunch of keys रहला कि a bunch of grapes रहला ता पर हम कोन करता सिंगुलर वर्ब यूज करता हो so the significant proportion of the migrant workers तो एटा गोटे कलेक्टिव नाउन को बुझौछि तो एटा सिंगुलर आसला तो एटा कोन आसबो हैज देछि तो हैज ठीक अछि हैज ऑलरेडी रीच देयर होम स्टे से माने समानन को घरे पहुंची सारी चंती एटी बोलतिले बले देयर देछि जदी थाला टी एच ई आर ई ताले भूले थाता जोडा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम एग्जाम रे दे दी थाए तो रीच देयर होम स्टे थैंक्स टू द रिलैक्सेशन देखो बले हियर वी नीड a noun ना कि ओडे वर्ब रिक्वायर करा छिबो त माने धन्य थैंक देबनी ई जगह नाउन रो कोन हो थैंक्स हबो थैंक्स काको टू द रिलैक्सेशन को थैंक्स टू मिस्टर साहू की थैंक्स टू मिस्टर दास तो थैंक्स हवा कथा धन्यवाद को ना धन्यवाद जणे नै धन्यवाद नाउन सेंस इट यूज हबो थैंक्स टू द रिलैक्सेशन काको ना अनाउंस्ड अंडर लॉकडाउन 4.0 क्लियर तो एटी सी रे भूल रहला थैंक्स करा छिबो क्लियर तो आंसर सी नेक्स्ट को जवाब ले नेक्स्ट को मूव करिवा डिस्कशन हैव बीन स्टार्टेड ऑन हाउ बेस्ट टू यूज द स्किल्स फॉर लोकल डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स आर बीइंग फर्दर फॉर लिंकिंग विथ लोकल इंडस्ट्रीज देखो डी मार्क कर बले से कोची डिस्कशंस हैव स्टार्टेड ऑन हाउ बेस्ट टू यूज द स्किल्स डिस्कशंस प्लुरल देछि तो have started on कहा ऊपर ना how best to use these skills for local development माने local development कितने best use कर पे and initiatives are being further for linking are being initiatives टा को are being taken हवा कथा here a verb is missing initiatives are being taken कर परिवा चांदनी 156 ई ठीक अछि आंसर देखो तुम्हें आंसर ठीक दोउछो बट मे बी मो वॉइस तुम पार पहुंची और लेट हेबो कैन ऑलरेडी ता भीतर मु बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन डीटा क्वेश्चन सारे नहीं ओके तो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम रहउछ आदि कम पाए यूजुअली हमर गैप रहे केते नियरली 40 सेकंड्स वाला गैप रही थाए तुम मो भीतर कम्युनिकेशन पाए बट आज मते से गैप रे अधिक लागुछ नियर अबाउट 2 to 3 मिनिट्स वाला लागुछ ओके तो जो थिरे मु कहिया पर 2 मिनिट परे तुम पाखरे सेटा जाई टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होतबो ओके तो जा भी हो तो देखो पहले मैं डिस्कशन कर दोछु विथ एक्सप्लेनेशन जहां भी तुम माइंड रे क्वेश्चन जोठी डाउट होवार अछि मो एठी पर क्लियरली जाउछि होप तमन डाउट किछि रहिबा नाही तो देखो एठी कोन कहली फर्स्ट कहली डिस्कशंस हैव स्टार्टेड प्लुरल देरा तो हैव असला हाउ बेस्ट टू यूज व्हाट हाउ बेस्ट टू यूज दिस स्किल फॉर कहां पाए न लोकल डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स त मु कभी टेक इनिशिएटिव माने किछि ओडे इनिशिएटिव नबा को बुझे तो इनिशिएटिव्स आर बीइंग it verb taken to make are being taken further man ago pain for linking with local industry ta mane here the verb is missing so for that reason mark answer C clear
नेक्स्ट खोजिया पिले क्वेश्चन नंबर 159 खोजिबा 158 गला 159 157 सी चांदनी में सी यस सी करेक्ट 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 समझता हूँ Question 159 देख देखो given the present states of thing एठी given means what पिले given माने considering एटा given माने कौन आछि considering असला considering the present states of things the machinists plumbers electricians and the lights will have little space or no space where in the village economy or the rural ecosystem तावन देखो देखिए प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ थिंग देला एटी फर्स्ट होला कंसीडरिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स हवा द वर्तमान रो अवस्था बुझो स्टेट्स ता अप्रोप्रिएट हुए एटी गोटा अनकाउंटेबल सेंस रे रेफर्स करा होची द प्रेजेंट स्टेट करा एटा गोटा अवस्था को बुझौची एटा प्लुरल हबो नाही तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स हवा द स्टेट्स ऑफ हवा नाही कोन द कंसीडरिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स वर्तमान रो प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करतल को ना गिवन गिवन माने होची कंसीडरिंग ऑल द मशीनिस्ट plumbers okay rela all the machinists plumbers and electricians will have little space or no space where in the village economy or the rural ecosystem तो एठी कोडा भूल रहयो पिले एटा को भूल ने 159 रो is the wrong answer तापे देखिबा अब देखो okay the 60 देखो this process may be subject to artificial intelligence led technique used so that the subjectivity is minimized if it cannot be altogether avoided देखो पहले ये जाकर कौन देची this process may be पर तुम्हें भला वेंचर may plus be पर वर्ब थर्ड फॉर्म तो का मोडाल रहला मोडाल प्लस बी जदी रहबा आइदर इट गोटा एडजेक्टिव टे दियो नहले एठी गोटे वर्ब थर्ड फॉर्म टे दियो तो सब्जेक्ट तो नाउन होची मे बी सब्जेक्टेड टू कर पाए द दिस प्रोसेस मे बी सब्जेक्टेड टू कोड बाय ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टेक्निक so that the subjectivity is minimized if it cannot be altogether avoided जदी अवॉइड हेई परिबो नाही माने डेफिनेटली पैसिव सेंस रे कहै cannot be avoided तो एठी पिले कोडा भूल रहला फर्स्ट पार्ट ता भूल रहला 160 रो इन क्लियर पिले नेक्स्ट जदि कार किछि डाउट रहउछि कमेंट बॉक्स में लिखो पढै की संख्या जानै देब now move करिया नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट सेशन पहले फिलर्स चूज करछि देखो एठी फिलर नाही पहले सेंटेंस कनेक्टर सेंस नै छी तो सेंटेंस कनेक्टर कोन देछि देखियो ए जगह से कहछि इन ईच क्वेश्चन देयर आर टू सेंटेंसेस व्हिच कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट माने दीरा सेंटेंस देछि जाको हमें गोटे सेंटेंस स्टेटमेंट रे कन्वर्ट कर परबा इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज तुमे बोला जानि गोटे सेंटेंस को वी कैन राइट इन डिफरेंट वेज तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग न चेंज करी below them are given three probable starters ता माने एटा स्टार्टर्स देछि of such combined sentences 1 2 3 or none of them may be correct decide upon which is or are correct if any answer of the question ता माने तुमको मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टर तुमको फाइंड आउट करिया अछि ठीक अछि तो बता हम देखिबा चांदनी बड़ा आंसर दोछो विकास बड़ा आंसर देछो ए समस्त आंसर ठीक अछि तो 151 रो क्वेश्चन देखि देबा से कहछि कि the new companies act came in 2013 it looks like it was brought in hurry से कहया कथा कि 2013 रे कंपनी रो न्यू एक्ट ता बना गला जणा पडुछि कि जेम एटा ओडे तरतर करी बना जाछि it was brought in a hurry so देखो ता माने कोन हे परिबो कोड स्टार्टिंग करिया the year 2013 appears that
that too कौन सा मीनिंग आसु ओके the it was year 2013 which हवा कथा नहीं when हवा कथा when जोटा बॉयस जो माने ईयर कथा देछि तो when हवा कथा इटा भाबो नहीं इटा भाबो it appears that এটা জনা পড়ছে কি it appears that the new companies that came in 2013 was brought in a hurry তা মানে এটা সি টা হই পারিবো তো आंसर তোমার সি 151 সি বিকাশ ঠিক আছে সাবজেক্টেড টু तो এটা 151 টা বুঝিয়ে রাখবে it appears that the new companies act came in 2013 which was brought in a hurry 52 को चलो we have successfully brought down fiscal deficit so which हमने successfully fiscal deficit को reduce कर पाछन bring down and reduce we have achieved our targets हमने कोन कोन हम targets को achieve कर पाछन तो बता देखिबा कोन no sooner did the fiscal no sooner केतरा होबो जे त at a time काम किछ होतो गोटाय पर गोटा एक्शन जदी हला सेतो हमें no sooner यूज करिया पूजा वेरी गुड मॉर्निंग पूजा तो no sooner did the fiscal जेमिति फिस्कल डिफिसिट को ब्रॉट डाउन कराई छि सेमिति हमें अचीव करले कि ना तो एटा होबो we have not I mean कोइ पारे we have successfully brought down fiscal deficit we have achieved our targets okay we have not failed एटा में कोइ पारे कि we have not failed to achieve our targets because we have successfully brought down fiscal deficit ही परिवार ना आमे माने फेल ही ना हम टारगेट को अचीव करिए रे काहे कि ना हमें सक्सेसफुली ब्रॉट डाउन कर दीजिए फिस्कल डिफिसिट तो बी ऑप्शन ता तुम नहीं पाए टू बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स हमको ताबर कोई देखो टू बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स हमको हम टारगेट को अचीव करबा समर्थ रे हमें कोन कर टू बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स माने हम टारगेट्स को अचीव करिया सक्षम हवा पाई हमें कोन फिस्कल डिफिसिट को रिड्यूस करछे ना तेन 152 जोड़ा रेफर्स करछे सेरा एठी सी टा भी एप्रोप्रिएट हेई पारु नाही तो ओनली बी टा ओके वी हैव नॉट फेल्ड टू अचीव आवर टारगेट्स बिकॉज़ वी हैव सक्सेसफुली ब्रॉट डाउन फिस्कल डिफिसिट क्लियर रूपाली वेरी गुड मॉर्निंग 151 सी राइट बड़ा आंसर दो छबिले पूजा सी राइट विकास भी सी गुड वन 151 बी सी चलो गुड 153 देखिए Johnson told Queen Elizabeth II to suspend Parliament for 5 weeks. His critics argued this was an attempt to thwart them in their efforts to restrain him. Here, so Johnson told Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II कहले कौन पाए ना to suspend Parliament for 5 weeks. 5 सप्ताह धरी 5 सप्ताह पाए Parliament को suspend करेगा. तांको critics argued, his critics माने कहाँ Johnson के critics. कौन आर्ग्यू करे दिस वाज एन अटेम्प्ट कोटा फिले ना जेदी सस्पेंड करिया पार्लियामेंट ता कोन हबो ना इटा अटेम्प्ट रहबो थॉट माने प्रेशर देम बा थ्रेटनिंग देम इन देयर एफर्ट्स टू रिस्ट्रेन हिम ओके मन ताको एफर्ट्स थॉट देम इन देयर एफर्ट्स टू रिस्ट्रेन हिम ता स्टॉप करिवार जे एफर्ट्स अछि ताकू से कोन करियो थॉट करियो बाधा दबो तो बर्तन देखा इटी कोन रही परियो द क्रिटिक्स टू स्टार्ट कर परिबे के The critics now meaning asuna the moment Johnson told Queen Elizabeth II जो moment रे Queen Elizabeth को अगर no asking Queen Elizabeth II to suspend Parliament for 5 weeks Johnson was criticized okay Johnson's critics argued it was an attempt to thwart them हे बारे देखो asking Queen Elizabeth to suspend Parliament for 5 weeks Johnson's critics argued this was an attempt to thwart them in their efforts to restrain 153 हमें या नहीं परियो ता माने कोन हे परियो सी टा नहीं परियो ना नहीं asking Queen Elizabeth II to suspend Parliament for 5 weeks Johnson was criticized but Johnson's
Johnson's critics argued this was an attempt. His critics are Johnson's critics argued it was an attempt to thwart them in their efforts to restrain him. Clear? तो माने C टा नहीं पारियो अब एमती कोई पारे the critics A टा भी नहीं पारियो C एल ये देखो the critics argued कौन Johnson's Elizabeth to Johnson's talk व Johnson's word कि Johnson's view कौ विषय about Elizabeth to suspend Parliament for 5 weeks by Johnson's suggestion किसी भी नहीं पारियो okay. The critics argued Johnson's suggestion to suspend Parliament for 5 weeks was an attempt to thwart them in their efforts to restrain him. Now, A B he para C B he para. So only A and C in your best A paribo 153 A and C. Next आप देखो पहले small saving schemes are offered by the post office and also by some banks. They can fit in well in your fixed income portfolio. So कुछ देखो small saving schemes are offered by the post office and also by some banks. They can fit in well in your fixed income portfolio. ताମାନେ कौन कोड स्टार्ट करि परिबा देखिया some banks जदि नहीं परिबा से कहै some banks नहीं परिबा this. Okay, small savings schemes are offered by the post office and also by some banks. Hey, pariba. Some banks offer small savings schemes which can fit in well in your fixed income portfolio. Hey, pariba na nahi. Some banks and the post office. Some banks and the post office offer small savings schemes which can fit in well in your fixed income portfolio. Eta appropriate hey pariba. देखो एटा बुझिया भारी सहज हो जाउछ एटा पैसिव रो अछि एटा ऑब्जेक्ट रहिला एटा वर्ब रहिला एटा सब्जेक्ट रहिला तो सब्जेक्ट को आगु नै गेले हे जोनी सम बैंक्स ऑफर स्मॉल सेविंग स्कीम्स अब डेटा कहां को रिप्लेस करछि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को तो आकु कनेक्ट कर देबे इसे तब देखिबा द स्मॉल हमें यदि नहीं परे कि द स्मॉल रो कोन से मीनिंग आसुना छाड़ दियो योर फिक्स्ड इनकम एटा भी एप्रोप्रिएट आसुना योर फिक्स्ड इनकम भी एप्रोप्रिएट आसुची आसुना your fixed income it has your fixed income portfolio हवा ना तो only answer कौन कर परिबा एटा A नहीं पर आउट देखिए आउ कौन उड़ देछि A सहित तो B देछि the small ना एटा किछ होई परिबनी तो चले बिट only E कर clear okay 154 टा छाड़ देथिले बेले 154 टा देखि दबा 154 कोन कहिछि देखो एटे over the past few quarters there has been a significant widening in the gap between the rates on small savings schemes and GSEC yields to which they are benchmarking माने ओडे हाई पॉइंट को बुझेबो जोटा कि ओडे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को रेफर्स करी the center will likely seek to reduce the gap this time around तो बर्तन कौन कहि देखियो over the past few quarters there has been a significant widening the gap between the rates on small savings schemes and GSEC yields का भीतर गैप देखियो पाइचंती small savings schemes and GSEC yields भीतर जोटा गोटा बेंचमार्क ही रही छी the center will likely seek to reduce the gap center बताने गैप को रिड्यूस करे चाहूची तो benchmark gap between the rates on small savings schemes मिलने पर भी कि small savings schemes the benchmark which they are benchmark the benchmark gap now at a benchmark gap to appropriate only to leave it to reduce the gap this time around again the center will likely to say na eta be hi par sab cheezen past few quarters has hava katha na have hava katha to chhada be past few quarters has na eta be meaning hi par leave it so it is none of this got a best of okay next
ना बर्तन दिया पिले 146 को जीवा यस पूजा डी ठीक अच्छे डी ना डी हबो नहीं 155 डी हबो नहीं ओनली ई ठीक अच्छे पूजा डी हबो नहीं ई करिवो रूपाली राइट आंसर देछो सॉरी पिले आज एक्चुअली बहुत गैप रोची मु आगे आगे भी पड़े जाई छी तुमे पछरे रहि जाई छ एमिति होउची पिले काना मो को डिस्कशन करिवार 2 मिनिट रु 3 मिनिट परे तुम पाखरे पहुंचू 3 मिनिट पाखा गई छी ओके चलो तो 146 को जीवा 146 रे कोन रेफरेंस को अछि देखा इटी he was so far away we really could not dash what he was saying okay देखो फर्स्ट थिंग दे वी कैन नॉट होल्ड अप माने होल्ड करता बुझे एप्रोप्रिएट एते ही वाज सो फार अवे से हमठार एते दूर थिला कि वी रियली कुड नॉट व्हाट ही वाज सेइंग हमें बुझी पारलो नै होल्ड अप हबनी हमें सुनी पारलो कि बुझी पारलो नै से कोन कहउतला गिव बैक हबनी केबे कना गिव बैक माने होची रिस्टोर को बुझे गिव अवे मींस कोन वर्ड डिस्ट्रीब्यूट को बुझेबो मेक आउट रो मींस कोन नै परिबो मैनेज सेंस रे बुझेबो हला मेक आउट मैनेज सेंस हैंग अप कट को बुझेबो एल हैंग अप द फोन हबो ओके तो बर्तन देखो दूर रे देथिला कि हमें मैनेज कर पालेन कि बुझी पालेन कि अंडरस्टैंड है मेक आउट टू अंडरस्टैंड भी परिबो तो आंसर कोन करे डी करे 146 आंसर ठीक मेक इट डी नेक्स्ट आपने देखो आई लुक ओवर व्हेन द रोस्टर क्राउड जते बळे गंजाटी बुबराबिला बुबैला सेतळे मु उठी पड़ले आई वोक अप हबो लुक ओवर माने होची माने डोंट लुक ओवर माने पर्टिकुलरली कोन करे छबो लुक ओवर ता रेफर्स करे छबो काको अनदेखा करिया सेंस बुझे ओके तो लुक ओवर ता एप्रोप्रिएट नै तापर पिक अप तो जानछो बले पिक आउट भी चूज करे आंसर लिव आउट हबो तो आंसर एटम उठीबा हमें उठी पड़ वोक अप करो बेस्ट क्लियर Now 148 देजी देखो the teacher had to put up with माने tolerate को बुझे a great deal of nonsense ता माने ठीक कोन हे परिबो तो tolerate सेंस से बुझे छी तो come up with पचला come up with था माने कोन ना particularly come up with माने रेफर्स करिवो का को ना हम किछि मैनेज करिया सेंस रे बुझे तापर jot down means ता रेफर्स करिवो कोन ना पर्टिकुलरली टू राइट डाउन को बुझे बार कोनो से मीनिंग आसुने राइट डाउन को बुझे ना ओके तापरे एठी ताले कोन द टीचर नॉनसेंस पिलांकर ट्रू को टॉलरेट करथला द टीचर हैड टू पुट अप विथ माने टॉलरेट करथले तो ए जारे नो करेक्शन पार कर बेस्ट जे तो नेगेटिव वर्ड जे नॉनसेंस वर्ड तो नॉनसेंस वर्ड माने को से टॉलरेट करथले बास होथले 149 देखो सी हबनी हियर सो फार वी रियली कुड नॉट होल्ड अप हबनाई वी कुड नॉट मेक आउट करिबो 146 सी करिबो After our month-long trip, it was time to break in on the neighbors and the news around the town. देखो break in हमारे break in टा enter by force को बुझे ट्रेन को बुझे कला बहुत long trip gap पर it was time कौन करिया रे ना हम पड़ोसी मान सहित मैच करिया रे मैच इन द सेंस माने तांको सहित मैचिंग हबार तो कैच अप विथ हबो तो कैच अप with the neighbors हमको neighbors मान सहित तांको सहित हमको निजो को एडजस्ट करिया रे मैच करिया रे अछि तो कैच अप विथ करा बेस्ट है लुक फॉरवर्ड टू हबनी लुक डाउन ऑन तो प्ले जानछो काको नीचे हिसाब रे देखिबा बाय ट्रीट इंफीरियर सेंस रे बुझेबा ट्रीट इंफीरियर ओके तो ये जगह रे ठीक आंसर एटा नियो तबे देखो 150 we tried to make up the money we are spending on the internet we tried to कौन करे जो make up the money
ना कट डाउन ऑन द मनी ना गेट आउट ऑफ द मनी ना टेक केयर ऑफ द मनी तार आंसर में कौन नहीं परिबा ना पर्टिकुलरली हमको मनी स्पेंडिंग एंटरटेनमेंट पाई हमको मैनेज करा होची कट कमे अपन तो कट डाउन वी ट्राई टू कट डाउन ऑन द मनी कट डाउन माने रिड्यूस करे अच्छे बुझेबो मेकअप ता बुझेबो ने टर्न ऑफ की गेट आउट ऑफ की टेक केयर ऑफ हो नहीं तो 150 सीनियर we tried to cut down cover on the money we are spending on entertainment जोटा काम है entertainment spending रे क्लियर तो आंसर एठी कौन गले सी टा को यूज कर तो होप एटा बुझी परछो बिले तो बर्तन देखिला बिले रीअरेंजमेंट को हम एठी देखिना बा पहले बाणिक रो सब ऑफिस पहले खोली जाई छे तो जो है जो जहाँ किसी डाउट थो ऑफिस को भी जाई पहुंचे पे आचार्य विहार रहिला साइड नगर रहिला ओके आ तापरे लाइब्रेरी जोड़ा अछि पहले सब सेंटर लाइब्रेरी था बर्तमान फॉर द टाइमिंग हम सीआरटी सदानंद विहार जो लाइब्रेरीटा अछि सेटा ही 11 तारिख रु खोला रहउची तो खोला रहला सकाळ मॉर्निंग राती मॉर्निंग 8 am रु 8 pm रहउची टाइमिंग रहइबो कोडा हमर जो सदानंद लाइब्रेरीटा अछि ओके तो ताकुटी मार्क करथु सदानंद लाइब्रेरी जोटा अछि हमर तो सेटा पले सकाळ 8 रु राती 8 पर्यंत खोला रहइबो ओके सेटा कोठी 14 तारिख रु खोली जाउची ओके तो आ विषय कंसल्ट में तुमे जे कोन से हम ब्रांच को जाई कि डिस्कशन कर परिबो तो एठी खोली जाउ 14 तारिख रु आ बाकी सब बैच पले कोडा स्टार्ट हि जिवो हमर 14 रु ही स्टार्ट रहउची 14 रु भी क्लास भी स्टार्ट हो जिवो तो जो मानकर जेहेतु एट ए टाइम सब बैच तो ओपन हो पारिबनी प्राइवेट बेसिस से सब बैच को कॉल करा जिवो तो जो बैच रे जो स्टूडेंट्स माने अच्छा तो पर्टिकुलरली वार्निंग वेब मींस फेसबुक पेज को देखो फेसबुक पेज को वार्निंग रो फेसबुक पेज को फॉलो करो आ वार्निंग रो ऑनलाइन रो साइट को भी जाई कि मार्क करो तम सब तो रूटीन बा टाइम टेबल सब तक पोस्ट होची ओके ताकू फॉलो करियो ठीक अछि आउ बर्तन आउ जो मानकर ए फास्ट ट्रूथ हे पारु नाही बा इंस्टीट्यूट को भाबियो कि बैच तुम कॉल कराय नो नीड टू ओरी होबार किछि मैटर नाही तो पुन सब तक फेज बाय फेज डका जिवो फेज बाय फेज ही स्टार्ट होबो बैच सब तक स्टार्ट होबो ठीक अछि तो एटा इंपोर्टेंट टिके थिला इंफॉर्मेशन थिला तो सेटा देली हेबे तो बर्तन हमें डिस्कशन पूर्ण कंटिन्यू करिबा तो डिस्कशन हमें 141 रु 145 को जिबा 141 145 रो देखै छी सेंटेंस अरेंजमेंट देई छी कोन सेंटेंस अरेंजमेंट देला छी मार्क करि से कहै छी देखो a major proportion of this workforce which माने can it be first sentence एटा फर्स्ट सेंटेंस हे परिबो नाही estimated 80 to 100 million will be there in the village at least in the near future तबे एटा केबे भेले फर्स्ट सेंटेंस हे परिबो नाही सेकंड को जिबा a significant proportion of the migrant workers has already reached their homestay thanks to the relaxation announced under lockdown 4 okay already question ना पिले थिला आज को थरे हमर एरर डिटेक्शन थिला हो थैंक्स टू द त माने ठीक अछि एटा द स्टेटमेंट स्टार्टिंग होनी तो और रखिया कास्ट तो कनेक्ट होई देखिए एंड दिस न्यू स्टेप बैक एट होम माने okay step back will be there in the village okay देखो ये वर्ड की माने रखो this new step back at home decision will have widespread impact both the place of work and most significant the place of residence okay तब देखिए ever since the country under lockdown the mass exodus of migrant workers
and applied dominated the headlines. The first रो हमें नहीं परिया कि एटा कौन रेफर्स करछि एक्सोडस माने मास डिपार्चर कहार होतला ना माइग्रेंट वर्कर्स मानकर जेते सब माइग्रेंट वर्कर्स मानकर मास डिपार्चर होतला सेटा सब बड़े बड़े हेडलाइन रही आसला त माने डी टा को मु चाहे फास्ट सेंटेंस रे पारि फास्ट सेंटेंस कोन कर डी नेली एवर सिंस द कंट्री went under lockdown, that is mass departure. The mass exodus of migrant workers and the flight dominated the headline. So headline को dominate करे वास्ते. Okay. तब देखिए while there have been efforts by states, tales of hardship, desperation, destitution have been moving all and sundry. जेतबे कि सबतो एफर्ट सत्ते भी एफर्ट बाय स्टेट सबतो हार्डशिप डेस्परेशन रो धरन डी पर कौन करे पारे ई नहीं पारे डी पर ई नहीं पारे but will they go back when order is they माने किए देखिए they टा गुड एफर्ट्स को आसीबो they देखि परछो significant proportion migrant workers आप हमें दे नहीं परिबा नहीं ओके ए बी पई एफ नहीं परिया त हम गोटे जान परले कि बी पर कोन आसीबो एफ आसीबो बी पर एफ आसीबो and help has come from unexpected quarter देखो इठी efforts एकाड मूविंग ऑल अराउंड and help तब का सपोर्ट कोची ई को जी सपोर्ट कोची जदि एफर्ट्स नहीं आइथिला तथापि लोक माने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करथले एवं हेल्प हैज कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर सिटीजनरी एंड सिविल सोसाइटी हु हैव गॉन टू ग्रेट लेंथ टू सपोर्ट द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप हेल्प करिया पई तो सब राउंड लोक माने चली आस्थिले तापर कोन आस परिबो डीईजी तापर नै परिबो कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन माइग्रेंट वर्कर्स हैज ऑलरेडी रीच तापर रिजल्ट कोन हैला कि सिरा लोक माने पहुंच पारले बहुत इंपोर्टेंट माइग्रेंट वर्कर्स माने बहुत लार्ज नंबर रे 4.0 लॉकडाउन रे तां घर पाखरे पहुंचिले बी पर तो एफ तेला तापर कोन है परियो अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ दिस वर्कफोर्स देखो अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ दिस वर्कफोर्स को वर्कफोर्स रेला एफ देछि will have go restore post new normal एला जे तो बी दे वर्कफोर्स कथा कहिछि तो ए नहीं परिबो a major proportion of this workforce estimated 8 to 100 million will be there in the village at least in the near future और तापर कोन हे परिबो दाबे नहीं परिबो कैन दिस न्यू स्टेप बैक एट होम माने स्टेप बैक एट होम कोन तरह घर रहल को नियर फ्यूचर रे घर रहबे तो स्टेप बैक एट होम रे ताने ये पर कोन आसो सी आसो तो आर ऑर्डर टाइम में कोन नहीं परिबो ऑर्डर नहीं परिबो डी ई जी बी सॉरी बी एफ एस एरा ऑर्डर तो बर्तन देखने वाला क्वेश्चन टा तो बर्तन देखा जायछि क्वेश्चन नंबर कौन देछि 141 इफ सेंटेंस ए मेजर प्रोपोर्शन ओके इज द सिक्स्थ सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जदी से कहा कथा कि ए टा जदी सिक्स्थ सेंटेंस होछि ताहले राइट ऑर्डर टा कोन हबो ए 6 रे रह गेले त माने कोन आस परियो डी ई जी कोडा हला डी ई जी बी एफ ए सी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ तो सी नियर कोन नहीं परियो सी 141 आंसर इज सी 142 देज देखो which of the following will be the first and last sentence first के तो डी second last के सी डी सी माने ई which of the following will be third sentence after third sentence जी जी माने कोडा बी तार बचे ची सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस रेस्पेक्टिवली सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस ई परे बी ई परे बी ई बी माने कौन पड़े बी तब which of the following sentence will be fifth sentence माने 1 2 3 4 5 एफ माने कोड असला ए क्लियर तो एटा हला आर आंसर okay next कुछ आपले fill in the blanks कुछ बा रूपाली राइट आंसर दो जो डी ई जी बी एफ एस सी राइट समस्त आंसर ठीक अछि
तो बता देखो पहले ये क्वेश्चन कौन देछे ना 136 रो तुमको आंसर पचार छे कौन ना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन so which in each of the following question below there are three sentences number 1 to 3 with one blank in each sentence choose the option from which the first word can fit both sentence 1 and 2 ता माने प्रति ऑप्शन दीटा वर्ड देछि दीटा वर्ड द फर्स्ट 1 और 2 रे फिट हो और लास्ट टा सेकंड रे फिट हो दरकार तो बता देखि देबा implication माने imply करिबा visualizing visual ru visualizing असला implement to implementation strike to striking intervention striking देला intervention interfere को बुझेबो interpretation माने interpret करिबा सभी interference से आस परिबो configuration configure करिबा gathering को रेफर्स कराइछबो तो एठी ताले देखियो एठी को वर्ड टाइप सुटेबल हे परुछि तो प्रेफर्स को देखो एठी monetary policy implication has not worked even as growth in decline implication of in monetary policy ro involvement of बुझे involvement रे हम कोन करि परिया intervention both countries say that intervention मतलब interference ta is purely humanitarian the seat ही appropriate करा the world is staring at an unexpected economic reversal जो unprecedented economic reversal है परिबो unprecedented means which never ever happened before সেই টাইপের economic reversal हैला तो समझते आश्चर्य जीवन है नहीं तो staring at हो staring पाखरे 8 टा होई परिबो तो ऑप्शन सी टा intervention and staring 137 देछि देखो एठी से कहछि a quick dash of the latest Chinese economic indicator does not bolster one's faith तो फर्स्ट देछि perusal देला corroborated देला persuasion देला response देला fix देला control देला सब पिले मीनिंग बना अछि परस्यूट कंटिन्यू करिया perusal देला corroborated supported को बुझेबो collaborated gathering को बुझेबो calibrated excellence को बुझेबो skill को बुझेबो तो बर्तन देखि दबा एठी कोन तो देखो एठी कोन होई परछ लास्ट को जीवा द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो डैश बाय द लेटेस्ट डाटा रिलीज कहा द्वारा इज आल्सो कैलिब्रेटेड द स्किल को बुझो डिवाइस माने पार्ट को जे अराइव तो हे परिबन कोलैबोरेटिव माने का समुद्र हो नै तो कॉर्पोरेटेड कर परिबो कॉर्पोरेटेड माने सपोर्टेड को बुझेबो का द्वारा बाय द लेटेस्ट डाटा रिलीज तो कॉर्पोरेटेड ही प्रिपेयर नियो दैट इज ऑप्शन ए नै परिबो तापर देखि देबा कि quick perusal of the latest Chinese economy indicators does not bolster माने कौन पिले strong को बुझेबो strength को बुझेबो bolster माने support बा strong को रेफरेंस करछि तो एठी हम कोन कर परियो quick perusal कर परिबा आ कोन कर परिबा सेकंड टाइम कर परिबो कोन ना that is corroborated by the latest data तो ऑप्शन ए नै परिबो ओके तो 137 रे आंसर हम कोन कर परिबा that is the quick perusal of the latest Chinese economy perusal माने होची perusing बा perusing सेंस नै परिबो a quick perusal कहारो ना pursuing of the latest Chinese economy indicators does not bolster one's faith जानकर faith को सपोर्ट करने तापर कहेगा कि a perusal of more disaggregated data shows that the lower growth is primarily contributed by negative growth in gross fixed capital foundation okay तापर कर परिया गोटा ना that is the increase in consumption expenditure by the government is also कौन है चीज corroborated by supported ओके एटा करो ये समस्त ठीक रोज आंसर मिले
138 देखि नवा सर्च देला शूट देला सॉरी सर्च देला थ्राइव देला शूट देला रिवाइव देला मूव देला लाइव देला गो क्लाइम सर्वाइव कन्वे तो कन्वे टा माने जानथा बिले कन्वे मींस कोऑपरेट को बुझियो ओके तो नेक्स्ट स्टेज तो कहै छै फिजिकल डिफिसिट इन 2021 would they would dash up in the range तो माने शूट अप would shoot off को बुझे गो ऑफ होबनी क्लाइंब अप होबनी शूट अप कर तो would shoot up ओके तब थर्ड टा देखि दबा in India the short run solution could be fiscal intervention as monetary policy has done its bit to combine restore देछि restore टा माने पॉजिटिव वर्ड देछि तो पॉजिटिव वर्ड पे कोन कर bit to ओके bit to revive कर bit to revive माने पुनः डेवलप करे अछि restore and growth तो revive and restore growth ओके तो एठी तुमे सी टाउन या वेस्ट रे परिबो a healthy okay a healthy should form a strong grab should माने कार गछर ऊपर पार्ट को बुझे shoot एठी तो एठी healthy shoot कर पर could shoot off है ना रेस कर बुझे in the range of 5 to 6% तो आंसर एठी सी तो बता देखो 140 रा देखि दबा सॉरी 139 देखो ओके तो 139 कौन दिस द करेक्ट मीनिंग देखो एडवाइस आंसर एक्सेप्टेड आंसर रिस्पेक्टेड आंसर यूज आंसर ट्रीटमेंट तो 139 रा कौन ही पहुंच देखि दबा Today it looks like the vast population in India is a demographic burden. Advised given the way of nation has dashed this worker. Okay. देखो ये कौन बुझेगा so today it looks like the vast population of India is a demographic burden তারপরে হচ্ছে advised given না treated demographic burden advised given the way of nation has dashed its worker it actually टिके fill in the blanks टे भूल रहला वाला लागुची दीटा ब्लैंक एठी दे देछि तो जोटा कि कोन बोसंती सुन से एक्चुअली जोटा क्वेश्चन को आउरी कंफ्यूज कर दोछे so today it looks like the vast population India is a demographic burden तो एठी काटी दियो बोले दवा दरकार considering the way of nation has dashed its worker or given the way of nation has dashed its worker has कोन देई परिबा एडवाइस देछि to use देछि एक्सेप्ट देछि ट्रीटेड देछि or expected देछि तो एठी कोन कर परिबो treated करि परिबो treated its worker has the way of nation has treated its worker को treat करा जाय तो डी नियम
The wood is dashed with preservative to prevent decay. The the wood is treated treated କରିପାରିବ तो 139 ର D ନିଅ okay. There is a need to understand why the combination of portfolio the D is the best answer. 139 D निଅ 140 भी ଯିବା घटिया पूरे वर्ड देखो प्राइम फेसिया माने एट फर्स्ट साइट ये सब लीगल टर्म गुड़ा पिला मन रखता अब इनिशियल माने स्टार्टिंग को बुझेबो डी फैक्टर माने होची रियल और हेड सॉरी इंडियन नहीं पड़ेगी डी फैक्टर ला कोन रेफर्स कराइबो दैट इज फैक्ट बा रियल को बुझेबो then carte blanche means होची unlimited ipso factor का को बुझेबो be that very difficult okay तो এটা বলে সব ওয়ার্ড গুলো ইংলিশ ছাড়া ওই সব ফরেন ওয়ার্ড গ্রিক ল্যাটিন ওয়ার্ড কিছু আছে যেগুলো জানি না তারপর দেখছি কনসেনসাস ওপিনিয়ন को বুঝিও কনসেনসাস एक्चुअली ভিউয়েন্স রুল জানছো तो there is no dash about the design of a good public policy making there is no consensus में एग्रीमेंट को बुझेबो जनरल ओपिनियन को बुझेबो तो there is no consensus about the design of a good public policy mix during the crisis okay তারপরে লিখ পারিবা ओहो नहीं हेपानी एटा हबो नहीं there is no एटा हो there is no rule करा rule about करा ई हबो ए नुए पहले भूल करले ई करा there is no rule about the design of food public policy with drink said the general rule in the office is that हेपरिबो that's one would expect तन कोन करा जिवो that is ipso facto one would expect the fiscal policy to play a critical role माने एटा ଗୋଟେ fact जुतरे कोन होची ना इप्सो फैक्टो टा भी अप्रोप्रिएट है पारने के लिए सॉरी एटा है पारने ना इट कॉन्स द जनरल रूल इन द ऑफिस रूल टा ठीक है और एटा ठीक होनी कंसेंसस एटा ठीक हो द जनरल कंसेंसस अब देयर इज नो कंसेंसस है पर तब प्राइम फेसिया one would expect the fiscal policy to play a critical role in the origin of the crisis the real sector at first sight prime facie टा कोन है परबो कि फर्स्ट रो one would expect the fiscal policy to play a critical role तो it is three टा appropriate हबो जोटा फर्स्ट को कहि देले सेटा ही ने बोले दिस ए 140 कोन करबे ए नै जाओ कंसेंसस और प्राइम फेसिया ओके yes because d ठीक अछि बोले बफर पुणी स्टार्ट हो जाई छै बफरिंग नेक्स्ट देखिबा बोले 134 135 देखनेबा द फिलिप पचाजी कोन अपोजिट
ओके तो बता चला बोले पैसेज को जो पैसेज पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा तो बहुत जोर बफरिंग होची क्लियर किछि दिसुनी बोले बहुत जोर बफरिंग होची हो एटी ताले मु देखे दोछि बोले देखो एटी तो को वर्ड सब देछि देखिनो बागे वर्चुअल देला फर्स्ट इट को वर्ड देछि वर्चुअल और देछि पेग्ड तो वर्चुअल रो देखो एटी पचारछि वर्चुअल रो मीनिंग कोन पचारछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज इन द पैसेज वर्चुअल देला जनरली वर्चुअल रे जे आसो तार हम कोन रेफरेंस कर परिबा ना वर्चुअल टा आसिले वर्चुअल ता पचारछि सेम वर्चुअल इमेज माने एक्चुअल तो नुहे ऑथेंटिक अप्रोप्रिएट ने फिजिकल की रियल नुहे इसे फॉर आउट ऑफ चूज द जित मीनिंग गिवन पैसेज ओके तो वर्चुअल माने पेग्ड पेग्ड माने फिक्स आंसर बुझेबो तो पेग्ड अर्थ असला में कोन यूज कर परिबा दैट मींस फिक्स कर परिबो तो ए जाय वर्चुअल इमेज त माने कॉपी इमेज तो सिमुलेटेड इमेज करो 132 टा ए नियो एटा बी नियो क्लियर एटी देखो एटी फिलिप फिलिप माने कोन गोटे माने दैट इज गोटे फ्लो को बुझेबो तो फ्लो आसला एटी कोन आस परिबो ए सब सिमिलर वर्ड अपोजिट पे जे हिंडर करे हिंडर माने बाधा दवा बुझेबो हिंड्रांसेस से नहीं परिबो हिंडर टा को सेंस रे हिंड्रांसेस बा बाधा दवा सेंस नहीं परिबो तो हम एटी कोन करि परिया हिंडर न्यूरन बूस्ट एडवांस ग्लो स्टिमुलेट सब फास्ट को बुझेबो अकिन अकिन माने कोन सिमिलर सिमिलर माने कोन छि लाइकिंग को बुझौछि लाइकिंग जेतरा अछि तार कोन एनालॉगस ता सिमिलर वर्ड हबो तो सिमिलर वर्ड पर जेन मो जे अपोजिट पर छै अपोजिट माने कोन कर अनलाइक क्लियर अकिन राइटी अनलाइक ओके એટલે बहुत ही आज नेटवर्क प्रॉब्लम रहउछि बफरिंग जोर से चलछि ठीक अछि हम केवल एटा कहि दउछि आ बाकी तो वीडियो रे हम सब मेंशन कर दै छी जहाँ जहाँ डाउट रहइबो ताते देखि लेबो ठीक अछि देखो so come question देखो even as policy makers across the globe are focused on containment of the covid-19 pandemic covid विषय देछि से कहउछि across the globe रे जति सब policy maker रहले से माने काम पर जो फोकस करछि ना covid-19 pandemic पर China is quietly bringing about a revolutionary change China can't produce कर पे जो revolutionary change कोथरे the currency and payment system one that India may have to follow since जोड़ा India भूसी follow करे जाउछि its central bank backed digital currencies the backman supported digital currency को digital currency electronic payment is being pilot tested in Shanghai Chongqing and Shenzhen Hangzhou and Suzhou as well being as young as a new area of Huawei since end of April. This pilot program was initiated in Beijing December last year. तमाने क्या कुछ कौन की जो pilot program का start एक लाखों digital currency electronic payment এটা कबे ना could started at Beijing last December. This expansion signals that China may be the first to launch a sovereign backed digital currency. मैं এটা clear कहूँ कि China गोटे sovereign backed digital currency टे launch कराई जाउची.
द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ वर्चुअल करेंसीज वर्चुअल माने जोटा कि कौन रहता है वर्चुअल करेंसीज माने एटा गोटे इमेजटा रही थाए से इमेज कथा कहूँ कि जोटा कि रियल न था वर्चुअल रहा इमेजिनारी जो बिटकॉइन कथा कह ऑनलाइन जो सब पेटीएम मनी रहा कि फोन पे मनी सब वर्चुअल को बुझे रियल तो पाखे तो आम न था ना तो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन लास्ट टिकेट माने कोड़ा बुझा पड़ी ना बिटकॉइन पॉपुलैरिटी लास्ट टिकेट बहुत भल रहा हार्ड मेड मोस्ट सेंट्रल बैंक्स लुक सीरियसली एट लॉन्चिंग डिजिटल करेंसी जो सब बैंक माने सीरियसली भाविले कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पे जोटा कंट्रोल होतो से द्वारा दैट कैन एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ वर्चुअल करेंसीज माने वर्चुअल करेंसी रो शॉर्टकमिंग्स टा को एड्रेस कर परिबे while hastening the shift towards hastening माने तत्तर होगा बुझेबो the shift towards a cashless society माने से माने सोसाइटी पाडू मोबाइल मूव करे जोड़ा कि कैशलेस जो कैश लेते in a survey conducted by Bank of International Settlements around 80% are cities responding central bank said they began working on central bank issued digital currency 9 तमाने सब प्राय पका के 80% बैंक माने सेंट्रल बैंक्स माने एग्री हो गले कि एग्री ही चंती कि समान डिजिटल करेंसी प्रमोट करछन्ते in some form. Besides, China Sweden has made good progress with its e-corona project. ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଇ କୋରୋନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି तब देखो China's DCEP can be stored in a mobile wallet. China's DCEP mobile wallet store like other cryptocurrencies and is pegged fixed to China's fiat currency in the ratio 1:1. It appears to be a two-tiered structure. The structure wherein central bank interfaces with the financial intermediary. Central bank how interface करे ना financial intermediaries को who in turn interface जे की finance interface करता है with the public लोगों के सामने face करता है that it is superior to the currency bunch of virtual currencies on many grounds. One, it is being designed and launched by a central bank and can therefore be accepted as legal tender in monetary transaction. If once central bank accepts it, legal tender is considerable. Two, our reason is since it is pegged on a fact to the fiat currency, it will not witness the stomach. It will not witness the stomach churning volatility that is common in other crypto assets. जेरा कि से आप तार जो चेंज हो जाउचे एते शीघ्र चेंज होउचे फ्लक्चुएट एते करिवो नाही An important difference is that while the DCEP will be based on the digital ledger technology, the ledger will be centralized. Also, creation of the new units will be in the central bank's control to enable it to control money supply and effectively implement monetary policy. There will be significant saving to the government in not having to print and manage physical money. And the reduction in tax evasion can lead to higher revenue. यदि tax evade हुए ताले higher revenue को कौन करेगा impact पकेगा. There are, however, concerns that using a digital currency will be akin similar to serving data regarding all the transactions the government on a platter. These concerns will have to address by the Central India look at its own digital currency project on passage digital currency project ऊपर बेस करছে. Okay. তারপর কইছে কি India's plan to move away from physical cash to digital payments and objective articulated in the monetization program will also get a fillip at the launch of a CBDC hasen মানে যে তত্ত্ব রহিলা তাহলে তাকু भी launch করাଯିବ. While the RBI in April 2013 prohibited entities regulated by it from the transaction in cryptocurrency such as Bitcoin, it has not made much progress in launching its own digital currency. तन किए बिले ना जिते सो डिजिटल पेमेंट रहला सेमान ना निजर कहया कथा कि इट हैज नॉट मेड माने बिटकॉइन कथा कहला कि जोटा कि मेड करे नाही ता प्रोग्रेस लॉन्चिंग इन ओन डिजिटल करेंसी इट्स टाइम द सेंट्रल बैंक हैज इन द लॉन्च ऑफ इंडिया सीबीडीएस तो वर्तमान को जेते लॉन्च हैनी तो वर्तमान चाइना तो लॉन्च कर सची इंडिया रो समय आ जाय छि सीबीडीएस टा को लॉन्च करया पाए बुझेला बिले ताने एटा सिंपल कांसेप्ट बिले दै छि क्रिप्टो करेंसी बा डिजिटल मनी को डिजिटल मार्केट में केमते हम रिस्टोर कर पारे से विषय डिस्कशन होछि. तो बतन देखिए बिले एटा कोन दै छि व्हाट प्रमोटेड द सेंट्रल बैंक टू लॉन्च अ डिजिटल करेंसी. The need to address the shortcomings of virtual currencies. Yes, virtual currency la kamila boli sab digital currency gala. तब नहीं ची the need to divert attention no
the need to hasten the shift towards the A and C, तो only A and C करे best है. 126 D में only A and C. Clear? तो ये कौन रेफर्स करची shortcomings टा बुझ पाउछ तो पहले the shortcomings of virtual currencies तो A and C ने गलो. तापर देखी देखो how is China's digital currency superior to virtual refers कराई virtual currencies. Then it is being designed and launched by central banks. Yes, it will be accepted legal tender. Yes, it will not witness unpleasant volatility. Everything is there. तो आंसर E करो, all A B C करो. Okay. Next तापर देखो पहले find the incorrect statement on the basis of the given passage. Incorrect statement पहुंचे कोड़ा पहले नहीं परिवर्गे थी. The growing popularity of Bitcoin over the last decade forced most central banks to seriously एड़ा correct देची. China may be the first to launch a sovereign bank. Yes, एड़ा correct देची. Unlike other current currencies, China dice cannot be stored in mobile wallet. Yes, it can be stored in mobile wallet. एटा ही भूल देची पहले. तो आंसर तुम्हारा C नबो. कौन नहीं परिवो? C नबो. 129 देखिबा. What is the distinguishing features of the digital currency? तो distinguishing features कथा कहिछु कोन ना तमे नहीं परिबो कि it will be based on digital ledger technology. Yes, if the ledger will be centralized, yes, the creation of new units will be in the central bank's control. Everything is that on all A, B and C. Clear? The cases of tax evasion will reduce significantly. Yes, the government will save post physical currency. Yes, the government will save management cost. Yes, so everything is that on all A, B, C. Your passage both easy अच्छे पहले खाली direct question अच्छे. तापर बचे what is the tone of the passage? Tone of the passage पहले এটা clearly analysis कराया इच्छे तो ये तो analysis इच्छे तो answer इटे analytical अब apologetic क्षमा प्रार्थना करना थे. Vitriolic टा bitter sense से refers करनी. Indignant टा angry देखले इतला indignant है ना indifferent माने कौन सी प्रोजेक्ट तार कौन सी अपाथी था माने कौन सी फीलिंग्स ही ना था तो indifferent रहता था. तो इटे answer D में analytical में 131 D. Clear? तो ठीक अछि पिले हम सब पैसेज सब तो डिस्कशन करते ले क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करते ले बट आज बिगिनिंग जेम कहि आछि तुमरा मो भीतर गैप रहउछि तो मे भी तुम जो मे आंसर सब दोछ करेक्ट देछो. ओके तो ठीक अछि पिले आज रो क्लास को एठी वाइंड अप कर दोछि. तो बाकी नेक्स्ट क्लास रे उनथरे मीट कराय जो भोसरे तो ऑफलाइन तो स्टार्ट हे जाउछि तो ऑफलाइन रे मीट कराय जो बट फर्दर ए वीक पाइन तुमरा ऑनलाइन रो शेड्यूल बाहर जाइछि जो क्लास रोचे ऑनलाइन डिस्कशन पर्टिकुलर बतन तो डिस्कशन ऑनलाइन रे हबो तो ऑनलाइन क्लासेस को के मिस करबनी सब ऑनलाइन रे अवेलेबल था. ऑफलाइन स्टार्ट हेले हम ऑफलाइन कनेक्ट करबा. ऑफलाइन से मान बतन डिस्कशन पिलांगर हे नै केवल बैच पिला मान जो माने फंडामेंटल कोर्स कोचन से मान पाई. तो ठीक अछि पिले होप क्लास रो किछु डाउट नाही आ जदि डाउट रहतो मार्क रखिता मु तो आसी ऑनलाइन में मुझे डिस्कशन करबा. चलो आज पे पिले एति रहबा. Thank you. Have a good day to all of you. Thank you.